Hello, my dear friends. Good evening. Dr. Dhawan here. Yeah, good evening, everyone. Good evening. Hi, good evening, everyone. Good evening. We'll just wait for just a couple of seconds and start then. Yeah, I'm absolutely fine. Thank you very much for asking. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. Yeah. Yeah. We'll talk about it. Yeah. Sure. So, good evening, everyone. Once again, and the Dr. Dhawan here, your ENT faculty. So, 1 month from the exam, and the most crucial time. I agree to that, and that's why it's one of the Insta lives for the FMG January 2024 we are doing. मैं एक बात छोटी सी बोलना चाहता हूं कि जो फेज अब स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो 1 महीना बचा है आपके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे खेल का. इन इंग्लिश, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल गेम यू आर एंटरिंग इनटू. बट प्रॉब्लम क्या होती है, इसी समय सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट होता है. Right now, the feeling of imperfect preparation is hitting us, and पीछे पड़ा हुआ बोल रहा होता है कि भाई याद नहीं आ रहा और बहुत टेंशन हो रही, जीटी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट दिया था वो भी अच्छा नहीं गया, बहुत मजा नहीं आया. बहुत सारा खेल जो है दिमाग में ऐसे चल रहा था कि नेगेटिव 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 हो रहा है. इसीलिए ये इंस्टा लाइव इस समय डिसाइडेड मेरे दिमाग में था कि 1 महीना पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट लुकिंग दिस वे दैट वे कि मैं क्या करूं कि पास हो जाऊं. मेरे को अपने किए पे विश्वास नहीं होता कि भाई मेरी प्रिपरेशन तो परफेक्ट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, दे विल बी फीलिंग इन देयर हार्ट कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, माई प्रेपरेशन इज नॉट परफेक्ट. ऐसा तो नहीं लग रहा. Would you agree with me? Yes or not? Are you having this feeling of imperfect preparation of some subjects or couple of subjects? Don't you think so? The feeling is like that कि जितना मर्जी कर सकते थे, कुछ दिन वेस्ट हो गए, कुछ दिन पढ़ने का मन नहीं किया, एब्सोल्युटली पूरे डेडिकेटेड नहीं भी थे, कुछ दिन अच्छे से पढ़े लेकिन 2-4 दिन वेस्ट कर दिए. नाउ द फीलिंग इज दैट प्रेपरेशन इज नॉट परफेक्ट. Now let me tell you very clearly, आपका पहला एग्जाम हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो एफएमजी का, लेकिन मेरा ये 26वां एग्जाम है एफएमजी का. माइन इज 26th एफएमजी एग्जामिनेशन, एंड इफ यू कैन ट्रस्ट मी, आई हैव बीन गिविंग दिस एग्जाम इन माई माइंड एवरी टाइम you guys appeared in your exam. So I passed the same mental phase as you are passing right now. पता नहीं क्यों है, कैसे है, लेकिन नीट पीजी 19 एग्जाम है तो ये 26वां पेपर है मेरा एफएमजी का. दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे, बिकॉज मतलब मैं यहाँ कोई जादू तो बताने आया नहीं, ऐसा तो है नहीं कि क्या कर, लेकिन मैं एक चीज बताने आया हूं. नाउ हियर मी आउट वेरी केयरफुली बेटा. इफ यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ, आई रिपीट, इफ यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ imperfect preparation for the exam at this moment, 30 days before examination, let me tell you very truly, in this feeling of imperfect preparation lies the perfect path to pass the exam also. I know the decision lies to the Almighty, that's his final decision, but should you have, क्या आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए इस समय कि मेरी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई होगी तभी मैं डिजर्व करता हूं पास होने का? एब्सोल्युटली नॉट. मैं बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग गौतम नगर में और अलग अलग सिटीज में जब एग्जाम से 1 महीना पहले मुझे मिलते तो बिल्कुल वही बातें कर रहे होते जो आज आप कर रहे हो कि सर भूल रहा है, जो पढ़ा हुआ था वो भी दिमाग में नहीं आता, अभी मेरा वो सब्जेक्ट रहता है, अभी वो रहता है, अभी ये रहता है, बहुत सर तैयारी अभी ऐसी चल रही है. लेकिन बाद में क्या खबर आई
कि वो लोग पास हो गए. इफ दे कैन पास देन वी कैन ऑल्सो पास. भगवान चाहे, ऊपर वाला चाहे तो. इसका मतलब ये हुआ, द लर्निंग ऑफ माइंड विद योर प्रीवियस बैचेस इज कि ऐसा नहीं है कि परफेक्ट प्रेपरेशन की फीलिंग के बाद ही पेपर पास होता है. नंबर वन. नंबर टू, look at the mandate of the paper. 150 out of 300 without negative marking. It means that you are not supposed to know everything about everything, but you are supposed to know sufficient enough to pass the examination. But the most important phase is starting now. Number one, do not now target your weaker subjects. मैं हमेशा बोलता रहा कि ये सब्जेक्ट नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आज हम एक महीना पहले एग्जाम में खड़े हैं. द स्ट्रैटेजी हैज टू बी एज पर दी 1 month नाउ. इफ योर वन सब्जेक्ट इज वीकर, फॉर एग्जाम्पल योर बायोकेमिस्ट्री इज वीकर, माइक्रोबायोलॉजी इज वीकर, और एनी सब्जेक्ट इज वीकर, नाउ डोंट वेस्ट 2 days फॉर दैट सब्जेक्ट. बेटा, दैट वुड नॉट बी अ राइट आइडिया. आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और वो उतना भी रह जाएगा. फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू आर नाउ फीलिंग दैट यू आर वीक एट, छोड़ के नहीं जाएंगे. Previous year question topic based study of that subject to be done in a smart way. I repeat, number one message for the day is that if you are having the feeling of imperfect preparation at this moment, there lies a perfect path to pass the exam within that imperfect feeling only. Number one. Number two, I will not now keep on spending 3-4 days, 2-3 days on my weaker subjects. It's a time to encash upon my strongholds now. 10 दिन रह गए, 21 December एंडिंग. अब 31 December फर्स्ट साइकिल हमारा रिवीजन खत्म होगा. व्हाट इज द बेस्ट schedule to follow? Your own schedule is the best schedule to follow. You know what is suiting you. My ops gynae is wonderfully done. मुझे लगता है कि मुझे ऑप्स gynae में बहुत टाइम लेना चाहिए, बट somebody might share a schedule. 3 दिन ऑप्स gynae की रिवीजन के लगा दो. You don't have to follow that schedule. You are the smartest person for your own self. बेटा, हमें डर लगता है कि मैं फिर भूल जाऊंगा, I will forget again. We already have the cyclical preparation in mind. मैंने लास्ट टाइम ग्रॉस फ्रेमवर्क बनाया था. Till 31st December, one cycle of revision should be ending. 31st December, we're going to take a break after 6 p.m. till morning 9 a.m. 1st January. ऊपर 1st January to 13th January, one more quick review of the notes of 19 subjects on the basis of questions of previous year question, test and discussion paper, and that's all about it. 13 दिन में यही हो पाएगा. 13 January evening again छोटा सा ब्रेक लेंगे. 14th to 19 January 6 दिन में फिर से मेन पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे. In these days, please do not, again I'm saying that, क्योंकि टेम्पटेशन आता है कि मेरी बायोकेमिस्ट्री वीक है, 2 दिन बायोकेमिस्ट्री पे लगा लेता हूं. अब वो टाइम नहीं है. आई एम सॉरी फॉर दैट. अब वो टाइम नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट, इफ वी डू बायोकेमिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज 2 days, 23rd 24th December, and if you don't revise the whole biochemistry once again, then even those two days go waste. बेटा, you know, 2 बार रिवीजन करने के बावजूद भी हमें अभी भी लग रहा है कि यार भूल रहा है, यार ये तो याद ही नहीं आ रहा, जस्ट याद ही नहीं आ रहा. आप डरो मत बेटा. आप मुझे सुनने क्यों आए हो? पता है क्यों आए हो? मैं बताता हूं तुम्हें. मैं होता तो मैं क्यों आता. इस समय सिर्फ एक चीज हमें सुननी है किसी बंदे से कि क्या ऐसी इम्परफेक्ट फीलिंग के साथ पास हुआ जा सकता है. तो बड़ी ऑनेस्टी, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि हाँ, हुआ जा सकता है. बहुत सारे लोग ऐसे ही पास हुए हैं. लॉट ऑफ योर सीनियर्स, योर कलीग्स पास लाइक दिस फीलिंग ओनली. मार्क माई वर्ड ऑन दैट. यस, द फाइनल डिसीजन लाइज टू Almighty, बट आई हैव अ फीलिंग डॉक्टर धवन ऑफ पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाया. मुझे ईमानदारी से बताओ डॉक्टर धवन कि क्या मैं पास होने का सोच सकता हूं? मैं कह रहा हूं तुम पास होने के बहुत ही पास हो, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है. 150 out of 300 विदाउट नेगेटिव मार्किंग. प्लीज अंडरस्टैंड द गेम बेटा. डॉक्टर धवन, आप तो कहते थे कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना. स्ट्रैटेजी इज डिसाइडेड एज पर टाइम. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ मंथ बिफोर एग्जाम. तब हम बात कर रहे थे 3 months बिफोर एग्जाम. हर चीज, हर बंदा अलग अलग जर्नी पे होता है. डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद समबडी एल्सेस प्रेपरेशन. आई एम टेलिंग यू, हमें होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट बेटा. एवरी इंस्टीट्यूट, एवरी फैकल्टी tries to do their level best to give the best of content to you. You may have used X or Y.
ठीक है, बट हमें लगता है किसी ने Z यूज किया, किसी ने तीन दिन का रैपिड रिवीजन कोई अटेंड कर लिया, डिड आई मिस आउट एनीथिंग? नो। उसके साथ भी लोग पास हुए, उसके बिना भी लोग पास हुए। ट्रस्ट योर रिसोर्स बेटा, यहां वहां भागते रहेंगे कुछ नहीं होता उससे बेटा, एक जगह फोकस किया, ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट योर रिसोर्स, जो भी फैकल्टी का फॉलो कर रहे हो रिवाइज करो बेटा, नंबर 1। नंबर 2, now let me come to, please do not leave the habit of multiple choice questions. Last time, January 2023 paper, the biggest learning was people who kept solving questions, they passed more as compared to people who were doing more theory revision. That's why I'm saying that 1st January to 13th January, the major revision will be PYQ and test and discussion paper based revision of the important point of the notes. Are you getting my point over there? Is it clear to everybody? Now, how many GTs and mock tests I should be giving? In 30 days, everybody please, this is most important thing beta. 30 days, you should be giving 2 GT, 1 mock, 1 GT, 2 mock, whatever you think appropriate beta. But 3 बार इस पूरे एग्जाम की ड्रेस रिहर्सल पक्का करनी है। डॉक्टर धवन, मेरे जीटी में मार्क्स अच्छे नहीं आते, 135, 137, 143, 156, 157 ऐसे मार्क्स आते हैं, और अगर 183 आ भी जाते हैं, आई ऑलवेज फील दैट कि मेरे तुक्के मार के नंबर आए हैं बेटा। रियल पेपर में भी ऐसा होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। योर जीटी और मॉक टेस्ट हैज गॉट नो कोरिलेशन विद योर फाइनल एग्जाम आउटकम, इट इज जस्ट टू ट्रेन योर ब्रेन बेटा। These GTs and mock tests are to train your brain to do the 19 different subject multiple choice questions in one day in the same way as you will be appearing on the final exam day beta. Grand test beta. Grand test or mock test whichever. आप 3 नहीं कर सकते, 2 तो करके ही जाने। Everybody please note it down. 2 दिन फिक्स कर लो। Morning you have to get up the same way as you'll get up on 20th January. First test will start on the same time as you start on 20th January. You'll take the break also same time beta. Then you start the paper 2 on the same time. Let us make a pledge today between 2 of us that Dr. Dhawan, मैं 3 तो नहीं कर सकता, मेरे 3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। 2 days let us keep for absolute simulated examination. As we are going to live on 20th January, I will consider that as an opportunity to train my brain for time management skills. मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, जब 75th मिनट खत्म होता है तो 82nd क्वेश्चन क्रॉस हो जाना चाहिए। 75th मिनट ऑफ द एग्जाम इज गेटिंग ओवर, आई मस्ट हैव क्रॉस्ड 82nd क्वेश्चन में 82 83 क्वेश्चन करना चाहिए मेरे को। प्लीज अंडरस्टैंड दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम ऑल्सो पेपर 1 पीपल वर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, लास्ट के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन किए हैं और कोई तो वो भी नहीं कर पाए, छूट ही गया बेटा पेपर। हम ये गलती नहीं करेंगे। आप अभी से लिख के डेट लिख लो कि ये 2 दिन कोई भी मॉक टेस्ट आप चुन लो, किसी भी इंस्टीट्यूट, प्रेफरेबली ज्वाइन मॉक टेस्ट ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूट बेटा। कितने नंबर आते हैं छोड़ दो ना बेटा, मेरा 26वां पेपर है, ट्रस्ट मी, कोई कोहेरेंस नहीं है बेटा, कोई कोरिलेशन नहीं है। डिड यू डू द जीटी रिव्यू और नॉट? डिड यू लर्न द टाइम मैनेजमेंट और नॉट? Did you do it the same way? Don't finish your mock test before 135 minute बेटा। आप क्या कर रहे हो? ग्रैंड टेस्ट करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, 100 मिनट में 150 क्वेश्चन करके खत्म हो जाता है, फिर गलतियां हो जाती हैं, फिर लो फील करते हैं कि मेरा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसी गलती नहीं करनी। जो मॉक टेस्ट है दैट विल बी डूइंग इन द एग्जैक्ट सिमिलर मैनर। लेट अस यूटिलाइज एटलीस्ट 135 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस, नॉट लेस देन दैट बेटा। मैं कह रहा हूं टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर द शूज, sit on the table and chair and do it at least 2 mock tests or 1 GT 1 mock, preferably 2 GT 1 mock or 1 GT 2 mock, whichever thing। 3 बहुत ही बढ़िया है, 2 कर लो तो भी बहुत ही अच्छी बात है। Now, Dr. Dhawan, what is the perfect plan to prepare for me? Your plan is the perfect plan, beta. Dr. Dhawan, what you would have followed if you were FMG? I would have finished 1 cycle of revision by 31st December. 1st to 13th December, 13th January, I would have done 1 more section of revision on the basis of, PYQs and TND paper based revision of important point of notes. From 14th January to 19th January, I would have looked at the important point of notes 1 more time. Pharma revision, I will be sharing on schedule. We are again going to get connected on Instagram Live on
close to 30th, 31st December. Then we'll again going to connect on 13th January and then 19th January night also, at night before exam. That's already in my mind that we are going to connect like that 3 more times. 30th, 31st December, 13th January, and then 19th January again night. Let us be connected. We are working as one group, beta. You are not alone. Why I'm here today and why you are here today? Because you are passing through a state of mind in which there's a lot of turmoil, beta. डर लगता है भाई कि कौन कहता है कि डर नहीं लगना चाहिए बेटा. It is impossible for me at least to find a human being who can say I never feel scared. I am always positive about the outcome. There is not even a single person on the planet, let me tell you. डर सबको लगता है बेटा. Please mark my word on that. But we need to contain and control this anxiety. How we contain or control the anxiety? More hard work you do, less anxious you will feel. I repeat, hard work is the best antidote for anxiety. Hard work is the best way to decrease the fear of failure. Hard work is the best way to keep our mind in control. But it is only going to help you 80% of time of the day. In a day, 20% of time you will feel negative or low. Nobody can take that away from you because you are an active human being with a very active brain over there. The brain always oscillates like a pendulum between positive and negative. डरो मत बेटा. मैं ईमानदारी से आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, हम पास होने के बहुत ही पास हैं बेटा. रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में. लेट अस डू आवर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड बेटा. लेट अस डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अलमाइटी. जो होगा देखी जाएगी बेटा. एक एटीट्यूड को पहन लो बेटा. वेयर दिस एटीट्यूड इन योर माइंड. मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, मानता हूं. मेरी तैयारी परफेक्ट नहीं है, वो भी मानता हूं. 30 डेज में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितना पड़ा हुआ है उसको अच्छे से 2 बार फिर से रिवाइज करके जाने के. आई नो दैट आई डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, but I know sufficient enough to pass the examination. In the last 30 days, I will retouch the important point of my notes 2 more times. I will not leave the habit of doing multiple choice question in these days. I will do at least 2 mock tests in these 30 days in the exact same manner as I'll be living on 20th January. If my seniors, my colleagues could pass the previous exam with this feeling of imperfect preparation, then I also have the highest chance to pass the examination if God blesses my hard work. Yes, I know that. I have all the legitimate reason to feel negative. I have all the legitimate reason to feel fear of failure because I'm a human being. But I understand that if I do more hard work, I will feel less anxious. If I do more revision, I will feel more confident about my success.